इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। My lovely students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's special blessings be upon you all and may you remain safe and sound. After these beautiful supplications, as you know that I often start my lecture with beautiful poetry, and today once again I am going to read out Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah's poetry, who says Tatiya thadiv ka kanhe vel vihan ji, Tatiya thadiv ka कान्हे वेल वेहण जी, मतां थिए ऊंदाह पेर न लहीं प्रिय जो, मतां थिए ऊंदाह पेर न लहीं प्रिय जो. So these were the marvelous lines said by great poet of Sin Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah alayhi, who is commonly called Sono Latif, La Latif. Dear students, as you know that we have covered 26 angles of verb to have so far, and today we are going to cover another angle of verb to have, that is angle number 27. And the meaning of to have in today's lecture is acquiring, obtaining, purchasing or adopting something. What? Acquiring, obtaining, purchasing और adopting something. बेटा इसका मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को हासिल करना या ख़रीदना या इख्तियार करना या अपनाना. किसी चीज़ को हासिल करना, ख़रीदना या अपनाना या इख्तियार करना. फाइन बेटा. Without wasting time, we come to our today's lecture. So let's start. In angle number 27, the verb to have is used in the sense of acquiring or obtaining or purchasing or adopting something. I repeat, in angle number 27, the verb to have is used in the sense of acquiring or obtaining or purchasing or adopting something. As I told you before that the meaning of verb to have today will be acquiring something, obtaining something, purchasing something or adopting something. ठीक है. इसकी उर्दू तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है ना. हासिल करना, खरीदना या इख्तियार करना या अपनाना. इख्तियार करना या अपनाना. ठीक. So let's come to its examples. Example number 1. These shoes are the best to be had. I repeat, these shoes are the best to be had. ये शूज खरीदने के लिए बेहतरीन हैं. ये शूज खरीदने के लिए बेहतरीन हैं. आपने देखा कि the meaning of verb to have is खरीदना over here. These shoes are best to be had. ये शूज खरीदने के लिए बेहतरीन हैं. ये शूज खरीदने के लिए बेहतरीन हैं. फाइन. So that was example number 1 wherein the meaning of verb to have was खरीदना. Fine. Now we come to another example. That is, this suit is not the best to be had. I repeat, this suit is not the best to be had. ये जोड़ा खरीदने के लिए सही नहीं है. ये जोड़ा खरीदने के लिए सही नहीं है या अच्छा नहीं है या बेहतरीन नहीं है. ठीक है. ये जोड़ा खरीदने के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है या बेहतर नहीं है या बेहतरीन नहीं है. फाइन. वंस अगेन द मीनिंग ऑफ वर्ब टू हैव इज खरीदना. फाइन. सो आफ्टर एग्जांपल नंबर 2 वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल. दैट इज हिज दिस हैबिट इज द बेस्ट टू बी हैड. आई रिपीट, his this habit is the best to be had. I repeat, his this habit is the best to be had. इसकी ये आदत इख्तियार करने के लिए बेहतरीन है. इसकी ये आदत इख्तियार करने के लिए बेहतरीन है. इख्तियार करना या अपनाना डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है. इख्तियार करना या अपनाना वो हम पर इन्हिसार करता है कि इन व्हाट वे वी टेक इट्स उर्दू. फाइन. इख्तियार करना या अपनाना. फाइन बेटा. इख्तियार करना या अपनाना. लुक एट दिस. यहां पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है अडॉप्टिंग. इसका मतलब होता है अपनाना या इख्तियार करना. व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ड अडॉप्टिंग इज इख्तियार करना या अपनाना.
किसी चीज को इख्तियार करना या किसी चीज को अपनाना. So that was example number 3. Now we move towards example number 4. That is, the target you have set is not that much easy to be hit. I repeat, the target you have set is not that much easy to be hit. जो टारगेट आपने सेट किया ना, उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है. जो टारगेट आपने सेट किया है उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है. मतलब वो टारगेट आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता. फाइन. यानी कि जो टारगेट आपने सेट किया है उसको हासिल किया जाना इतना आसान नहीं है. इट मीन्स दैट इज डिफिकल्ट. इफ इट इज नॉट easy, it means that is difficult one. Fine. Okay, so that was example number 4, wherein the meaning of verb to have was once again acquiring, obtaining, purchasing, or adopting. I repeat, acquiring, obtaining, purchasing, or adopting something. Fine beta. Okay, after example number 4 we move towards example number 5. That is, the brand you are asking cannot be had at this price in Pakistan. I repeat, the brand you are asking cannot be had at this price in Pakistan. जिस ब्रांड का आप पूछ रही हैं या जो ब्रांड आप मांग रही हैं, जिस ब्रांड का आप पूछ रही हैं या जो ब्रांड आप मांग रही हैं, वो इस कीमत में पाकिस्तान में आपको नहीं मिल सकता. जिस ब्रांड का आप पूछ रही हैं या जो ब्रांड आप मांग रही हैं, इस कीमत में आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकता. फाइन. वंस अगेन, द मीनिंग ऑफ वर्ब टू हैव इज नथिंग एल्स बट obtaining something, acquiring something, purchasing something, or adopting something. Fine. Okay, so that was example number 5, wherein the meaning of to have was acquiring, obtaining, purchasing, or adopting something. Okay, after example number 5 we move towards another example. That is example number 6. This flat is not very expensive, semicolon. It can be had very easily. I repeat, this flat is not very expensive, semicolon. It cannot be had very easily. ये फ्लैट इतना महंगा नहीं है, इसको आसानी से हासिल किया जा सकता है. ये फ्लैट इतना महंगा नहीं है, इसको आसानी से हासिल किया जा सकता है. फाइन. नाउ लुक, the meaning of have over here is purchasing, adopting, acquiring, or obtaining. Fine. Once again, the meaning of to have is हासिल करना, इख्तियार करना, खरीदना. Fine. Okay beta. Fine. So that was example number 6. Now we move towards the last example related to angle number 27, wherein the meaning of verb to have is हासिल करना, खरीदना, अपनाना या इख्तियार करना. Okay, example number 7. This post is a key post, comma, it cannot be had easily. I repeat, this post is a key post, comma, it cannot be had easily. I repeat, this post is a key post, comma, it cannot be had easily. ये पोस्ट एक अहम पोस्ट है, इसको आसानी के साथ हासिल नहीं किया जा सकता. ये पोस्ट एक अहम पोस्ट है, इसको आसानी के साथ हासिल नहीं किया जा सकता. इट मीन्स के one will have to do a lot for obtaining that particular post. What is that post? That is a very key post. ठीक है बेटा. So आपने देखा कि in today's lecture again I taught you another angle wherein the meaning of verb to have was obtaining something, acquiring something, purchasing something, or adopting something. Fine. I hope whatever I have taught you today you have understood it in good way. And still, if you have got any confusion, any question, any query, Sir Shokat is with you. You may ask me the questions in comment section. I'll be there to answer your questions. Now. By the grace of Allah the Almighty, we have covered
27 angles. Inshallah, you will be taught another angle of verb to have that would be in my next video. And before ending today's lecture, as usual, I often end my lecture with beautiful dua, which used to be said by Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who would say, Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge, O Meri Allah, Meri ilm izafa kar, O mujhe Rabb, mujhe ilm izafa kar. So these are the final words for today's lecture. Inshallah, meeting you soon in next video. Until next video, Assalamu alaikum and bye bye.